saw their fathers and mothers. They saw this is not so in Western countries. Hare Krishna marriage on our island. We live on an island in the middle of a lake. And I invited the whole Indian community, Hindu community from Belfast. There came with 9 buses, about 800 people. It was a beautiful day in May. We, the Hare Krishnas, perform a Vedic. So my wife, she told me, I saw in India, in a marriage there is a horse. We have to rent a horse. So the wife that was to be married, she was riding before. She knew how to ride a horse. She said, there's a horse. I want to ride this horse into the fire arena. I said, Mataji. I know in India it is a husband who rides on the horse, a wife goes behind with her friends. She said, if I cannot ride this horse, I don't want to get married. So I was pleading with her, please, Mataji, please. Okay, then my husband and the horse keeper said, then you will break the back of that poor animal. One person on the horse, otherwise none. One person on the horse. In the meantime, the Indian Brahmin came, Mr. Shukla, I remember his name. Mr. Prithu Das, the whole Indian community is waiting. The Havan has already started. Please come. Please come. I said, the wife wants to sit on the horse. She said, please explain, it is not our system, it's not our way. I said, please, you explain. I tried since 1 hour to convince him. He was in a shock when he heard that. He was in a shock when he heard that. In any way, by the end of the day, she was sitting on the horse like the Maharani of Udaipur. Riding into the arena. The husband, he was very humiliated, walked beside and holding the horse. It's not my idea, it's the wife's idea. And so Mr. Shukla, he told me that this marriage cannot work. It must break. Because the wife does not know how to be a wife. It's very clear in India, and in Indian context it's very clear to you. Not in the West. Everything is possible. So I'm telling you this just to give you an idea how safe it is to follow the tradition, the traditional path of Vedic culture. That is the most valuable thing India has, its culture. And if that's lost, if the family tradition is lost, Krishna says in Bhagavad Gita, a hellish situation is created. No, not Krishna, Arjuna. Arjuna says in Bhagavad Gita, then a hellish situation is created. And that is happening in Western countries. And it comes into India via Bollywood,
और एक भारत में बॉलीवुड की कृपा से सब हो जाए। So many people have no peace in their family lives. The modern Delhi families, modern Bombay families, marriages are breaking up, divorces are there, children speak up to their parents. और आज के समाज में इन सब के प्रभाव से शादियां टूट रही हैं, बच्चे माता पिता को कोस रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। And no respect before elders. और बड़ों के लिए कोई सम्मान ही नहीं है। I remember I was in Paris. एक बार मेरे को याद आ रहा, मैं पेरिस में था। There was an old man going over the street एक वृद्ध व्यक्ति रास्ते पे चल रहे थे with a cane, अपने डंडे के साथ, and all the children were laughing at him. और जो बड़े-बड़े बच्चे हैं उनकी तरफ हंस रहे थे। They called him PPS, PPS, PPS. PPS means one who will not survive the next winter. और PPS करके उनको चिढ़ाते थे। इसका अर्थ है एक व्यक्ति जो इसके बाद का ठंडी नहीं देखेगा। He will not survive the next winter. Think of how cruel. सोचिए कितने क्रूर तरह के व्यक्तित्व मतलब बोला जा रहा है। How cruel it is to kill the cow, Srila Prabhupada said. It is the end of civilization. और प्रभुपाद जी कहते थे ये कौन सी संस्कृति है? हाँ, गोवध करने वाली संस्कृति। What to speak of killing the child in the womb? ये तो अपने बच्चों को माँ के गर्भ में मार देती है। What mother would kill her child in the womb? कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चे को गर्भ में मृत्यु प्राप्त करे? See how deep and far the degradation of the age of Kali has come. देखिए कितना कलियुग का प्रभाव आ गया है। Not only that, I mean, there are more excesses I could talk about. I don't want to even mention them in front with respect to the deities. तो और भी भयंकर कार्य है, हम भगवान के सामने इसका उच्चारण भी नहीं कर सकते मेरे दिमाग में। There's a very dark side to Western civilization. तो ये पश्चिमी संस्कृति का बहुत भयंकर अंधकार में ही स्थिति है। Therefore, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami, he said 100 years ago, he said the Western civilization has to be destroyed. भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने 100 साल पहले कह दिया था, एक न एक दिन इस पश्चिमी संस्कृति को समाप्त होना है। I'm not saying it, Bhakti Siddhanta says. मैं नहीं कह रहा हूँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा। And that was 100 years ago. ये 100 साल पहले की बात है। Then what to speak of now? और क्या कहें आज के बारे में क्या? You know, in just to give you an example, मैं उदाहरण देता हूँ। people don't know where they're coming from. लोगों को पता ही नहीं कहाँ से प्रकट हुए They have हैं। no idea that they're eternal. उनको यही नहीं पता कि वो शाश्वत है। They don't know where they're going to, उनको यही नहीं पता कहाँ जाएंगे। where they're going to when they die. वो मरने के बाद कहाँ जाएंगे यही नहीं पता। They don't know who they are. उनको यही नहीं पता कौन है। Who am I? वो है मैं कौन हूँ? Am I a man or am I a woman? उनको यही नहीं पता वो पुरुष है स्त्री है क्या है। Many people don't know. बहुत को पता ही नहीं। In Denmark, you can change your gender every month. डेनमार्क में हर महीने में आप अपना जेंडर या लिंग बदल सकते हैं। You get 2 passports. आपको 2 पासपोर्ट मिल जाते हैं। In one passport, your name is Sven, the boy. आपके एक में स्पेन बोल के boy है। And the other one is Svenja, a girl. और दूसरे पासपोर्ट में स्पेनिया लड़की। So 1 month you dress as a boy, the next one you dress as a girl. तो एक महीना पुत्र के रूप में पुरुष के रूप में, दूसरे महीना स्त्री के रूप में। Bahut pagal. ये पूरा पागल है। Western civilization. पश्चिमी देश, पश्चिमी संस्कृति पूरी पागल है। Therefore, it is very good to stay within the Vedic paradigm. तो ये वैदिक कार्यक्रमों में रहना अच्छा है। It's a very safe position. ये बहुत ही सेफ जगह है। I remember we were sitting in Prabhupada's room one time. मैं प्रभुपाद जी के रूम में रहा था। And Satadanya Prabhu, he came. सातत्य रूम पर आए। And he said to Srila Prabhupada, the Ganga is rising and rising. तो उन्होंने कहा गंगा जी अपना बढ़ते जा रही है। But it cannot come over Bhakti Siddhanta's road. लेकिन वो भक्ति सिद्धांत रोड को पार नहीं कर पाएगा। Bhakti Siddhanta's road is in front of our temple. तो ये भक्ति सिद्धांत जो रोड है ये मायापुर में हमारे मंदिर के आगे है। Then Prabhupada said, yes, as long as we stay on Bhakti Siddhanta's road, we are very safe. तो प्रभुपाद जी ने कहा जब तक हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के इस रास्ते को पालन करेंगे तब तक हम सेफ हैं। See how nicely Srila Prabhupada would take any situation to explain on a very deep level. और आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी कैसे की स्थिति को कैसे
अनुरूप या अनुकूल रूप में हमको समझा देते थे शास्त्रों के And अनुसार। outside of parampara, there's only darkness. और दूसरे साइड में सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। Like when Prabhupada left his body in his last days, जब प्रभुपाद जी अपने प्राण त्याग करे थे उसके लास्ट he asked his servant to give him some medicine. तो उनके जो सेवकों ने उनको दवाई देने का प्रयास किया। I happened to be right there, so I could see the exchange. मैं वहाँ नहीं गई थी, मैंने ऐसा सुना था। So Prabhupada, he was a medical man before he... प्रभुपाद जी एक मेडिकल मैन थे पहले। You take one pill, hold your bottle like this, take one pill, put it into a tray, and close the bottle. तो क्या करते थे, ऐसे दवाई का ऊपर का लिड खोल के पूरा दवाई पीते। Because if you take a pill and leave the bottle uncovered, it may knock over. तो वो गिर सकता है। You understand? If you leave the bottle open for a moment, you may knock it over with your arm. तो ऐसा जैसा प्रभु जी ने कहा, अगर आप खोल के रखेंगे तो गिर सकता है। So take your medicine like this, take a pill out, put it in a tray, close the bottle. तो वो एक दवाई को ऐसे लेते थे और बाकी दवाई को बंद कर देते। That's the only safe way. ये बहुत सेफ चीज है। So Prabhupada asked his servant, did you close the bottle? तो प्रभुपाद जी ने अपने सेवक को कहा, क्या आपने बोतल बंद किया? 2 days before he left the body. 2 दिन छोड़ने से पहले। The servant said, no, Srila Prabhupada, I forgot. उन्होंने कहा नहीं प्रभुपाद मैं भूल गया। And then Prabhupada said, listen to this. प्रभुपाद जी ने उनको क्या कहा? He said, this is your disease, all of you. मतलब ये रोग है आप सबका। You know how to open bottles. आपको पता है किस तरह से बोतल खोला जाता है। You don't know how to close them. लेकिन आपको पता नहीं किस तरह से बंद किया जाता है। You start so many new things. आप बहुत सारे नए-नए कार्य शुरू करेंगे। And you do not see the consequences. आपको पता नहीं इसके क्या consequences होंगे। You're introducing so many things, this and that, there will be consequences. Maybe in 5 years and 10 years, we don't know. तो आपको पता होगा ये 5 साल 10 साल में क्या होगा आपको नहीं पता। Look at the whole material civilization is simply opening bottles. भौतिक संसार पूरा सिर्फ बोतल खोलने के माफी चल रहा है। And they don't know how to close them. तो पता नहीं इसको कैसे बंद करना है। We are in the middle of a huge environmental crisis. बहुत बड़ा ये environmental या प्राकृतिक crisis चल रहा है। Everybody has been opening bottles. सब लोग ये बोतल खोलने की तरफ कार्य कर रहे हैं। Nobody knows how to close them. किसी को पता ही नहीं इसको कैसे बंद करना है। This is what Prabhupada explained right there. प्रभुपाद जी ने इसको समझाया किस तरह से। In such a little situation. एक इसी स्थिति में भी He was such a genius that from a little thing he could immediately understand the whole mentality of Western civilization. प्रभुपाद जी छोटे से ही ने इतने बुद्धिमान थे कि इतना सबको समझाया। And then he added, you know how to open bottles, you don't know how to close them, you start so many new things, you don't see the consequences. You know how to live, but you do not know how to die. And that I have to show you. तो प्रभुपाद जी ने इस तरह समझाया कि किस तरह आप सबको पता है किस तरह से बोतल खोलते हैं लेकिन बोतल को बंद करना नहीं आता और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से प्राण त्याग करना चाहिए। And then little later they called Yaduba, the filmmaker, and Prabhupada said, you should film it. हाँ, ये तो प्रभु बुलाकर फिल्म बनाने के। And in this way we have the films, the final lesson. तो इस प्रकार से फाइनल लेसन बोलते जो आप देखते हैं आज वो प्रकार। This is how it developed, from just the disciple forgot to close the bottles all the way to the film. तो यहाँ हम देखते हैं इस बोतल के उदाहरण से सीधा फिल्म प्रकट हो गया। Srila Prabhupada's life was so perfect, he showed us on every level what to do and what not to do. प्रभुपाद जी इतने पूर्ण थे कि हमको हर समय मार्गदर्शन करते थे क्या सही है क्या गलत है। But sometimes we are so foolish that we think we know better. और कभी-कभी हम इतने बेवकूफ हैं कि हम बोलते हैं कि हम अपने को बहुत ही बुद्धिमान हैं और हम उनसे अच्छा जानते हैं। Why are we here in the material world? अब इस भौतिक संसार में क्यों हैं? Because we knew better than Krishna. क्योंकि हम सोचते हैं कि हम कृष्ण से ज्यादा अच्छा करते हैं। Right? We knew better. In the Bible, the story is that Adam and Eve were living in paradise. एडम और ईव में बाइबल की कहानी है कि दोनों पैराडाइज में रहते हैं। And I already told you, Adam went to Adharma. आदाम से अधर्म हो गया। Adharma. Because there was one tree. If you eat from this tree, it was stated in the Bible, you become as good as God. तो वो फल के बारे में कहा था अगर आप फल खा लोगे तो भगवान समान हो जाओगे। That is a forbidden tree. और ये वृक्ष एकदम
forbidden था. If we have only the slightest intention to compete with Krishna, जब भी हमारे में थोड़ा भी इच्छा हो जाए कृष्ण से कंपटीशन करें, Krishna will kick us out. कृष्ण हमको बहुत संसार में डालेगा. He's very tolerant, but he would not tolerate somebody speaking up to him in the spiritual world. तो वो कृष्ण बहुत ही सहनशील है, लेकिन वो इसको सहन नहीं सकते कोई उनके समान कंपटीशन करे या उनके भक्तों को तंग करे. So what happened to Adam and Eve? तो आदम और ईव को अभी क्या हुआ? The snake came तो सांप आया. and said, if you eat, do you know why you should not eat from this tree? सांप से कहा कि मैं क्यों इस पेड़ से नहीं खाना है? Said, no, tell us. तो नहीं बताइए. If you eat from this tree, you become as good as God. क्योंकि अगर इस पेड़ से आप ग्रहण करोगे तो आप भगवान के समान हो जाओगे. And so the wife was foolish. She took the tree and ate, and immediately she became full of lust. और पत्नी ने उसको ग्रहण किया और संग कामी बन गई. It is stated that they were naked in the forest. They didn't know who was male, who was female. I mean, they were just like innocent, like Sukadeva was swami. फल खाने से पहले उन लोग नग्न थे, लेकिन उनको पता ही था कौन पुरुष है कौन स्त्री है, सब एक बच्चे के बाप हैं. And as soon as they took the fruit from this tree of mundane knowledge, she became agitated with lust. He became agitated. The rest is history, the history of human race. और ये फल खाने के बाद दोनों एक काम प्रेरित हो गए इत्यादि. It's simply knowing better than Krishna. हम सिर्फ सोचते कि हम ज्यादा जानते हैं कृष्ण से. And so the materialist, he knows better than God. और जो भौतिक संसारी व्यक्ति है वो हमेशा सोचता है कृष्ण ज्यादा जानता है. Women have been women have feeding their children, breastfeeding for millions of years. माँ अपना स्तनपान करवा रही है लाखों करोड़ों साल से बच्चों को. And they invented artificial milk. और फिर Artificial milk. आर्टिफिशियल लोग आ गए. You know, the powder milk or दूध whatever. आ गए, दूध. And they feed this to their babies. और आजकल ये आर्टिफिशियल दूध पिलाया जा रहा है बच्चों को. And their babies become sick. और जब बच्चे बीमार पड़ जाते They हैं cannot develop, they don't become strong. तब वो शक्तिशाली नहीं रहते. And so there was a $10 million study. तो $10 मिलियन तक स्टडी हुआ. What is better, breast milk or powder milk? तब उन्होंने डिसाइड किया कि क्या ब्रेस्ट मिल्क या मतलब माँ का दूध या नॉर्मल दूध कौन सा अच्छा है. They came to the conclusion that breast milk is best for the child. तब उन्होंने देखा कि बच्चे के लिए माँ का दूध सबसे अच्छा है. I mean, every dog knows that. एक हर कुत्ते को पता है. Right? Every animal is feeding their children very successfully. They become very strong. और कुत्ते भी देख सकते हैं, जानवर भी देख सकते हैं, अपने बच्चों को अपना ही दूध पिलाते हैं और कितने शक्तिशाली बच्चे हैं. You know how long my older son was breastfeeding. और आपको पता है कब तक बच्चों को दूध पिलाना चाहिए? How many years? कितने साल तक? You want to know? आपको पता चाहिए? I cannot speak a lie in front of the deity. मैं भगवान के सामने झूठ नहीं बोल सकता. 7 years. 7 साल तक. He would not let go. 7 साल तक वो दूध पी सकता He था. wanted to drink breast milk. रोटी का लड़का 7 साल तक. His health was very strong. तो वो बहुत शक्तिशाली था. And as soon as we weaned him off, और जब भी आप we stopped it, we putting something on the nipple that is very bitter. Like some people chew the teeth, the nails, put some bitter on it, then he stops nail biting. तो कभी अगर आप जैसे कोई व्यक्ति नाखून खाने की आदत है, नाखून को कुछ कड़वा लगा तो नहीं खाएगा. Some liquid. तो कुछ लिक्विड. My wife put this on the breast. तो मेरी पत्नी ने वही काम किया. कुछ कड़वा लगा. Immediately he stopped breastfeeding. और उन्होंने संसद अपना दूध पीना बंद कर दिया. And after a week or two, he got pneumonia. और एक हफ्ते में उसको निमोनिया हो गया. He had no disease before ever. कभी भी उनको उससे पहले कभी रोगी हुआ ही नहीं था. It was such a shock for him that he became sick. और वो कितना बीमार पड़ गया. हमारे लिए सब शॉक था. So you see, old is best. They're the same. वो कहते हैं पुराना ही सबसे अच्छा है. If we stay on the narrow path of Vedic knowledge, we can never make a mistake. और संकीर्ण पथ पे चलेंगे ज्ञान के तो हम कभी गलतियां नहीं करेंगे. Prabhupada came for cultural conquest. He said he wanted to introduce this in Western countries. तो प्रभुपाद जी कल्चरल कॉन्क्वेस्ट में गए और कहा ये सब
पाश्चात्य समाज में प्रकट करना है। So our Umapati Prabhu, he said to Srila Prabhupada on the morning walk in 1966, Srila Prabhupada, was you preaching here in America will not be very popular with Americans. तो प्रभुपाद जी को एक भक्त ने कहा कि 1966 में कि आप जो इस तरह का प्रचार कर रहे हो ये बहुत ही पॉपुलर नहीं होगा अमेरिका में। He said the women will rebel when they hear that. और माताएं जब ये सुनेंगी ये आपके पीछे युद्ध कर लेंगी। Prabhupada said, I will not change the truth for the Americans. तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं अमेरिकनों के लिए सिद्धांतों को बदल नहीं सकता। Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Go Prabhu. So I would like to read a little bit. We don't have much time of Srila Shiva's. तो मैं थोड़े समय में ज़्यादा नहीं ये सेवा की बातों की चर्चा करूँ। So we have Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadadhar, Srivas. That's Srivas Thakur. तो पंचतत्वों में हम श्रीवास ठाकुर को भी देख सकते हैं। If you look at the Panchatattva, the person on the very right, there's Srivas. तो पंचतत्वों का जब हम विग्रह को दर्शन करते हैं तो सबसे दाहिनी तरफ आपके सफेद वस्त्रों में श्रीवास ठाकुर को The house of Srivas was a place where the Sankirtan was going on. और श्रीवास ठाकुर के घर में संकीर्तन आंदोलन शुरू हुआ। You can also, even today, you can go to Srivas Anga. आज भी आप श्रीवास आंगन में जा सकते हैं। In fact, if you go to Srivas Anga, अगर आप श्रीवास आंगन में जाएंगे तो then there वहाँ पे you can see they keep the Midranga there that was broken by the men of the Kazi. तो वहाँ पे आप देख सकते हैं आज भी वो टूटा हुआ मृदंग है जो कि चार काशी के लोगों ने तोड़ा था। You can see it on the internet. It's a आप broken. ये इंटरनेट में भी देख सकते हैं। The Panchatattva in the center, the Midranga that was broken by the men of the Kazi. तो ये आप देख सकते हैं पंचतत्व के कीर्तन में जहाँ पे इन्होंने काजी ने तोड़ा था। So he was living in this house, and at night the kirtan went on. और रात्रि में कीर्तन हुआ करता था। And in that house also took care this famous exhibition. I forgot the name. What was it? What was the name of it? Let me see. What was the name of it when the Lord exhibited so many different forms? Mahaprakash, Leela. तो भगवान ने अपने महाप्रकाश लीला में अपने बहुत सारे अद्भुत रूप दिखलाए। Then at one stage, Lord Chaitanya, he sat on the throne. एक बार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सिंहासन में खुद बैठ गए। And for one day and one night, एक दिन एक रात so many different incarnations of Krishna were manifested. तो उन्होंने बहुत सारे भगवान के अवतारों का दर्शन करवाया। And there was also the time, that was the time when one of his disciples, he played the form of Garuda. Who was that? In the form? He manifested Garuda, the form of... Yeah. Who was that? This Murari Gupta. Huh? Murari Gupta. He was in the mood of Garuda, and Lord Chaitanya jumped on his back, right? Lord Chaitanya jumped on his back. That was in Shiva's Anga. एक बार श्रीवास आंगन में महाप्रभु गरुड़ पे चढ़ना चाहते थे और हमारे मुरारी गुप्ता जो भक्त हैं वो गरुड़ का स्थान लेकर भगवान को अपने कंधों में चढ़ाए। And one devotee told me in the old Vaishnava scriptures, they're actually stating that he actually took the form of Garuda. Lord Chaitanya jumped on his back and manifested the form of Vishnu, and they flew around the house. तो ये वैष्णव जन कहते हैं जब भी मुरारी गुप्ता ने गरुड़ का एक रूप पकड़ लिया चैतन्य महाप्रभु विष्णु के रूप में उनके कंधे पे जाकर पूरे आंगन में भ्रमण करने लगे। There's so many pastimes of Shivas. ये बहुत सारे लीलाएं श्रीवास ठाकुर हैं। And unfortunately, we are short for time, but I just wanted to say something about it. I will read now. तो हमारे पास समय की कमी है, तो you will go ahead, है ना? So go ahead. One night, while Lord Gauranga was doing kirtan, एक बार जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे,
the son of Srivas Thakur, with a fever, left the body. और श्रीवास ठाकुर के एक पुत्र जो कि बहुत बीमार थे बुखार से, उन्होंने अपना प्राण त्याग कर दिया। The lady started crying very loudly. और माता रोने लगे बहुत जोर से। Srivas Thakur, on hearing that, quickly came into the room and found that his son was lying dead in front of all of them. और श्रीवास ठाकुर उस कमरे में आए और देखा सबके सामने पुत्र प्राण त्याग कर रहा है। He told them immediately to give up crying. तो उन्होंने कहा आप लोग अपना रोना बंद कीजिए। There should be no grief. और दुख को छुपा करके। Even most sinful person, if he's hearing the holy name, becomes liberated. और पापी से पापी व्यक्ति भी जो हरि नाम का श्रवण कर रहा है, वो मुक्त हो जाएगा। My son was so fortunate that he left his body hearing the Harinam Sankirtan of Lord Chaitanya and his devotees. और मेरा पुत्र इतना भाग्यशाली है कि उसने प्राण त्याग किया जब चैतन्य महाप्रभु का महासंकीर्तन चल रहा था। The Supreme Personality of Godhead Gauranga is personally dancing in our house. और परम गुरु का भगवान कृष्ण जो गौरांग रूप में आए, वो मेरे घर पे नृत्य कर रहे हैं। In this environment, my son is so fortunate that he died. और मेरा ये स्थिति में मेरा पुत्र ने प्राण त्याग किया, कितना भाग्यशाली है। He's returned to Goloka. वो गोलोक वृंदावन वापस चला गया है। Now, if you wish to cry, do it silently in your heart. आप रोइए तो चुपचाप अपने हृदय में। But don't tell anybody what happened, लेकिन किसी को मत बताइए क्या हुआ है। because you might disturb the ecstatic dancing of Lord Chaitanya. क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के इस भावपूर्ण नृत्य में बाधाएं डालेंगे। And if you disturb him, then I will tie a pot around my neck and drown myself into the Ganges. और अगर आपने ऐसा रोया या बाधाएं डाली, तो मैं एक मटके को अपने गले में बांधकर नदी में कूद जाऊंगा। After speaking these words, Srivas Thakur went back into the kirtan with a big smile on his face and began dancing wildly with Lord Chaitanya and his associates. और श्रीवास ठाकुर ने इतना सब आज्ञा देने के बाद एक बहुत मुस्कुराए और अपने चैतन्य महाप्रभु के साथ महासंकीर्तन में भाग लिया। When Lord Chaitanya came in to know about this incident, he cried tears of love. और चैतन्य महाप्रभु को जब ऐसा पता चला, तो उनकी आंखों से प्रेमाश्रु प्रकट हो गए। And said, how can I ever leave the association of such a pure devotee as Srivas Thakur? उन्होंने कहा मैं ऐसे श्रीवास जैसे महान भक्त का संग कैसे छोड़ सकता हूँ। He loved me so much that he does not even express his sadness at the grief of his son. तो उन्होंने कहा श्रीवास मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि अपने दुख को भी वो प्रकट नहीं करते मेरे सामने। And Chaitanya Mahaprabhu gave Srivas Thakur a benediction. और श्रीवास ठाकुर को उन्होंने एक आशीर्वाद दिया। There will never be poverty in your house. और कि तुम्हारे घर में कभी भी दरिद्रता नहीं है। Even if you simply stay inside the house, never even venturing out of the house, whatever you require will always come to your door. तो उन्होंने कहा श्रीवास तुम घर पे ही बैठे रहो, तो घर से बाहर निकलने की भी आवश्यकता नहीं, जो भी तुम चाहोगे सब तुम्हारे घर में ऑटोमेटिक सब आ जाएगा। Another leela, because और एक लीला से बताता हूँ। young Nimai Pandit seemed to have grown a little arrogant by his scholarship. और एक बार ये चैतन्य महाप्रभु जब युवा अवस्था में वो अपने स्कॉलरशिप के बारे में बताया। One day Srivas Pandit told him, why do people study? श्रीवास ठाकुर ने पूछा आप लोग पढ़ते क्यों हैं? So that they may understand what is devotion to Krishna. क्या आपको कृष्ण के प्रेम बारे में पता नहीं है, कृष्ण के भक्ति के बारे में नहीं पता? If by scholarship one does not gain devotee to Krishna, then how will that learning you help him? और ये जितना ही पढ़ाई करोगे कि कृष्ण के भक्ति में आपको सहयोग नहीं करेगा। It is simply an endeavor which is the end of nothing, a waste of time. क्योंकि ये व्यर्थ का समय बीतेगा। If you actually learn something, then begin to worship Sri Krishna now. और आपको सीख के फिर कृष्ण का नाम जप करोगे। Do not waste time. समय को मत वेस्ट करो। This is the purpose of your life. जीवन का लक्ष्य ये नहीं। Nimai laughed loudly as he replied, by your mercy certainly that will come to be. तो उन्होंने हंसा जोर से निभाई ने और कहा आपकी कृपा से ये सब संभव होगा। If you are kind enough to me, then tell me how to attain devotion to the lotus feet of Krishna. तो निमय पंडित ने कहा अगर आप मुझे पर कृपा करें तो मुझे बताएं किस तरह से भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त हो। Shortly after that, Mahaprabhu journeyed to Gaya, where he performed the pastimes of accepting
initiation from Ishwarapuri. और उसी के पश्चात महाप्रभु गया गए जहाँ पर उन्होंने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली। The Lord wanted to show us that without the blessing of great souls, He wanted to show us that without the blessings of great souls, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया कि अच्छे अच्छे भक्तों की कृपा थी, without the prayers of great Vaishnava beseeching Krishna to give his mercy to us, तो वैष्णवों के आशीर्वाद से कृपा प्राप्त होता है। there is no hope of receiving the mercy of Krishna. इसके बिना कृष्ण की कृपा प्राप्त होना असंभव है। So I have a personal little story in this regard to tell. मैं अपना एक कहानी बताऊंगा इसके संबंध में। One time एक बार की घटना है, on a morning walk, सुबह का जो प्रातः का जो वॉक है उसमें I asked Prabhupada a question. मैंने प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा। We were three devotees who had translated Bhagavad Gita from English into German. तो हम तीन भक्त जो अंग्रेजी से भगवद गीता को जर्मन लैंग्वेज में उसको प्रस्तुत कर रहे थे। It was at that time Sachinandan Prabhu, now Sachinandan Swami. एक थे सचिनंदन प्रभु, आज सचिनंदन स्वामी है। It was Vedavyas Prabhu, now Gauravani Swami. एक वेदव्यास प्रभु जिसका अभी नाम गौरवाणी स्वामी है। And it was myself. और एक मैं। So on this morning walk, I asked Prabhupada, can I ask you a question, Srila Prabhupada? और मैं हर बार प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछता था कि प्रभुपाद मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? And he said, yes. What is your question? और प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ। I said, I saw there's a verse in Bhagavad Gita, a quote from Srimad Bhagavatam. तो मैंने भगवद गीता में एक श्लोक देखा जो भगवद भागवतम से कोट लगता है। That one who chants the name of Krishna, he must have visited all the holy places of India and taking baths in all the holy rivers. तो मैंने सुना है कि जो हरि नाम ले रहा है उसने पहले सब पवित्र नदियों इत्यादि में स्नान कर लिया है। You know that verse? भारत के Famous verse. So I said, Srila Prabhupada, does that mean that I in my last life was in India? भारत में Does it mean, based on this verse, that तो इस श्लोक के आधार पर क्या ऐसा है कि मैंने भारत में सब कुछ तीर्थ कर लिया है? And Prabhupada smiled at me and said, maybe. प्रभुपाद जी मेरी तरफ देखे मुस्कुराए और कहा हो सकता है। He said, but the most important thing you have to understand in your life और बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको समझना है आपके जीवन में is, and he looked at me into the eyes and said, I created you good fortune. I created you good fortune, Prabhupada said. हाँ मैंने आपका अच्छा भविष्य बनाया। Yes, मैंने आपका अच्छा भविष्य बनाया। Prabhupada created all our good fortune. Prabhupada created all good fortune also, everyone. प्रभुपाद जी सबके लिए इस शुभ शुभ कृपा प्राप्त दे। Without the good fortune of Prabhupada, we would not be sitting here. प्रभुपाद जी कृपा के बिना हम यहाँ बैठ नहीं पाते थे। Prabhupada went alone to America with $7. प्रभुपाद जी अमेरिका के $7 के साथ चले। He walked in the snow with rubber shoes. और स्नो के ऊपर यानी बर्फ के ऊपर रबर शूज के साथ चले। And he suffered like anything in the first days. और उन दिनों में बहुत कष्ट प्राप्त किया प्रभुपाद जी ने। I remember one time in San Francisco, I was chanting at this famous hill where Prabhupada started the Hare Krishna movement in San Francisco. सैन फ्रांसिस्को में जो वो फेमस हिल है वहाँ पे मैं जप कर रहा था। That hill is called Hippie Hill. उसको टीपी हिल कहते हैं। There are many students, many hippies were there, and Prabhupada have them all dance. There's these pictures you can see where they're dancing in this park, Golden Gate Park. तो ये गोल्डन गेट पार्क में स्थिति के बारे में बता रहे हैं जहाँ प्रभुपाद जी कीर्तन किया करते थे। I was running the temple there next to it, and so I went there in the morning to chant my rounds. तो मैं वहीं पे मंदिर में चलाता था तो मैं वहाँ पे गया उस पार्क में जप करने के लिए। And then an old homeless person, you know homeless person? हाँ, जो एक जिसका घर ना हो वैसा व्यक्ति Was pushing a shopping cart एक वो कार्ट को धक्का दे रहा था, ट्रॉली को धक्का दे रहा था, from a supermarket. एक सुपरमार्केट से। And all his belongings was in there. और जितना भी उसका सामान है उसमें था। And he was old and black. He was a black man. और वो एक काला व्यक्ति था। So he passed me and he stopped right in front of me. और वो रुक गया मेरे सामने। And he looked at me और मैं कर देखा। for minutes.
एक मिनट के लिए I was getting worried. मैं थोड़ा डर रहा था। Then he said, that guy तो ये जो व्यक्ति है who started this Krishna thing, जिसने कृष्ण को स्वरूप प्राप्त किया, he was a cool cat. वो एक A cool cat. कूल अब इसका क्या है? बहुत ही शांत बुद्धिमान This is the highest praise you can get in the black community, that this man is a cool cat. तो ये काले समाज में ये सबसे बड़ा एक तरह से उपाधि है। कूल cat. I laughed hearing that Prabhupada was addressed as a cool cat. He said he was living in a house in a what was it? What was it called? No. In the what was it called? The street, Rotten Street in New York. Huh? No. Before that, this is in the Boyle Street. What was that? 26 No, in the I forgot the name. Do you remember the name, Surah? No. He was living in the I forgot. That particular area was the most rundown houses. So he said he was living in one of these houses. तो उन्होंने कहा इस तरह से बहुत भयंकर स्थिति वाले घर पे रहना। Is that this house was a complete mess? That means it was in a bad state. और ये जो घर बहुत ही अशोचनीय स्थिति में था। And then he stopped for a moment, and then he said, "But Jesus was born in a barn." हाँ, लेकिन जीसस एक बाण को क्या बोलते? Was born in a goshala. वो साला में पकड़ करते। So he made this comparison. तो उन्होंने इनके साथ उनको कंपेयर किया। And Prabhupada was living in a rotten house. Jesus was born in a goshala. And I was happy when I saw, and he left. और ये सब उन्होंने बताया कि वो चले So I could see what a high appreciation this man had for Srila Prabhupada. तो आप देख सकते हैं कितना उनके दिमाग में हाई एप्रिसिएशन। Prabhupada was living in the Bowery. That was the name of that street, in the Bowery. Sometimes I cannot remember. This is called a senior moment. Senior, you know what senior citizen is? It's called a senior moment. सीनियर मोमेंट। You don't remember. Anybody who has a grandfather, he knows that sometimes grandfather has a senior moment. जिसके भी दादाजी इत्यादि रहे उनको पता है किस तरह से भूल जाएगा। You cannot remember. So in any way, you see, Prabhupada, he was so appreciated by everybody, even by some pale, poor person who had no home. और प्रभुपाद जी आप देख सकते हैं कैसे उनको सभी सराहना करते थे, सभी तरह के सभी समाज के। He was Suriram Sarvabhutanam, he was a friend of everyone. तो इस तरह से जैसे सूर्य सर्वभूतानाम वो सबके परम मित्र थे। Like the Goswamis. वो स्वामी की तरह। Dira Jana Priyo Priyakaro. They were the friends of the rose and the saints. तो ये जो हमारे साथ वो स्वामी थे ये सब परम मित्र थे। You know, I remember when we had a proper, this is my last sentence, we had a property in Vrindavan, we stayed originally with one Gunda. तो प्रभुपाद जी के समय की बात कर रहा हूँ, हम लोग वृंदावन में रहते थे तो हमारे आसपास एक गुंडा रहा। We rented a house from this Gunda when we arrived in Vrindavan. तो जब हम आए वृंदावन पहुँचे तो हमने इस गुंडे का घर को I still know him was dangerous, मुझे पता था भयंकर व्यक्ति है। and we stayed in his house. और हम उसी घर में रहे। We rented his house. भाड़े पे रहे। So one day he invited me, why don't you come for lunch? एक दिन वो प्रसाद के लिए आए दोपहर की मध्याह्न। So I was afraid to say no. तो मैं उनको सर्विस करना चाहता था। So I went and saw how he took the food and put it in front of his little Krishna deity, bowed down and was offering the food. और मैं देखा वो किस तरह से भगवान के पास जाकर भोग लगा रहा था। And I asked him, how do you put these two things together? On one side, everybody knows you're Gunda. On the other side, you're offering your food to Krishna. How do you put these two things together? तो मैंने उनसे पूछा आप ये दो कार्य एक साथ कैसे कर रहे हैं? आपको पूरा दुनिया गुंडा के रूप में जानता है और इधर आप भगवान को भोग में लगा रहे हैं। He said, this is my Krishna and that is my business. और उन्होंने कहा ये मेरे कृष्ण है और वो मेरा बिजनेस है। Only in India. ये भारत में हो सकता है।
Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Go Premanand. Okay, so you want to do kirtan, okay? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Come on, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare 1, 2, 3, Hare Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Prabhupada, Jai Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, Jai Jai Prabhupada. Let me tell you before I go a little joke. मैं एक चीज आपको बताता हूँ, A little joke. एक जोक बताता हूँ। One time Brahmananda visited us in Berlin. एक दिन एक बार की घटना है, प्रभानंद मुझसे मिलने आए बर्लिन में। I can tell you many stories with Brahmananda Swami. तो मैं ब्रह्मानंद स्वामी के बारे में कुछ कहानी बताता हूँ। He was famous for holding the world record in eating gulab jamun. तो गुलाब जामुन का रिकॉर्ड रखते हैं इस्कॉन में। How many gulab jamun would he able to eat in one meal? तो आप सोचिए कितना गुलाब जामुन लोग खा सकते हैं, तो कह सकता है 82. 82 गुलाब जामुन, 82। We had to carry him upstairs. हमको उसको उठा के लेकर जाना पड़ा। He said he was hallucinating. He was seeing colors. अरे कि उनको वो hallucination होता है। And I came to Los Angeles and I heard somebody was snoring. तो मैं लॉस एंजलिस में गया तो मैं ऐसे कोई I said, what is that? मैंने ये क्या है? I said, Brahmananda. ये ब्रह्मानंद। We tried to wake him up since 3 days. मतलब 3 दिन से उनको उठाने का प्रयास कर रहे It is impossible. हैं। वो उसको I think he's an incarnation of Kumbhakarna. वो पूरी तरह की स्थिति में पहुंच गए। So he came to Berlin one time. एक बार बर्लिन आए थे। On the way, I remember, ये याद है। he brought me to the airport first. वो मुझे एयरपोर्ट पे लाए थे पहले। And one Mataji, she made me a brown bag of samosas और एक समोसे का बैग था ब्राउन कलर का। so that I had something to eat on the airplane. बोला आप प्लेन में खाएंगे। So I put the samosas between us. तो उनको समोसा रखा उन्होंने साइड में। So while Brahmananda was driving, he said, Prithu, और ब्रह्मानंद जी जब गाड़ी चलाते This- तो उन्होंने सुना। the smell is driving me crazy. तो ये समोसे का सुगंध है। Can I बाहर आएगा। can I have a look? It comes from that bag. क्या मैं आप लोगों को छू सकता हूँ? Can I have a look in that bag? तो मैं देखूँ उस बैग में क्या I है। said, sure. तो मैं दिखाया। We opened it up.
He said, samosas, समोसा my favorite. मेरे फेवरेट है Can I add one? मैं एक खा सकता हूँ Sure. बोला आप खाइए Can I add another one? एक खाने का दूसरा खा सकता हूँ Sure. बोला एक दो। One more? और एक Sure. और खाइए Just one more. और एक And then he would not ask me anymore. और उसका दूसरा बंद कर दिया The hand went down there, और एक के बाद एक हाथ दिया खाने eating. खाते रहे And after the 19th samosa, he said, Prithu, there's only one left. You don't need that, really. तो बोला 19 समोसा खाने के बाद बोला अभी एक बाकी है अब मैं नहीं खाऊंगा So he ate my whole bag. बोला मैंने पैक किया He was very funny. बहुत ही मजाकिया था One time I told him, Brahmananda, you were too fat because he was 200 kilos. मतलब प्रभात जी आप बहुत मोटे हैं आपको 200 किलो वजन है I think even more than 200 kilos. तो बता नहीं मैंने 200 से भी ज्यादा है I heard when the on the funeral pyre, तो मुझे याद है वो जब अंतिम संस्कार के समय में the funeral pyre was very expensive बहुत ही वो महंगा पड़ेगा because they needed a lot of wood, बहुत लकड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी right? So I told him, Brahmananda, you're too fat. मैंने कहा प्रभात आप बहुत मोटे हैं He said, Prithu, there's one verse in Bhagavad Gita which is very important to me. तो मतलब मेरे लिए भगवत गीता का एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण I asked him, what is that verse? है मैंने पूछा कौन सा श्लोक Krishna says, a true yogi never eats too much and never eats too little. तो बोला जो सच्चे योगी है वो ज्यादा भी नहीं खाता कम भी नहीं खाता I follow this verse very faithfully by 50%. तो मैं इस श्लोक को 50% पालन करता हूँ That means he never ate too little. So he was very jolly, a very happy person. So बहुत ही हंसमुख he came to Berlin है and he was looking in the newspaper तो न्यूज़ को पढ़ लेते हैं and he said, Swami Krishna Nanda, who is that? He's giving darshan. तो कौन है कृष्ण स्वामी दर्शन दे रहे हैं I said, I have no idea. मैंने बोला कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं He said, let's go and visit him. तो चल चल के उनसे मिलते हैं So we went there. तो हम लोग वहाँ गए We rang a bell. हमने बेल बजाया Young boy came out, 19 years old. एक 19 साल के बालक को निकले He was 99% naked. और उन्हें मतलब करीब करीब पूर्ण तरह से Just a little triangle the size of a Indian postal stamp. पोस्टल स्टैम्प The size of his coupon was the size of a postal stamp. It was very small. पोस्टल स्टैम्प का जो साइज का उस तरह का कॉपी था I said, oh, come inside. I'm so happy to see you. सरस्वती ब्रह्मानंद So he sat down. अंदर आ जाओ He sat down and he called, Gopi, Gopi, कॉपी Gopi. उन्होंने कहा कॉपी So his wife came out तो ये तो किया गया and she was 100% naked. और वो पूर्ण तरह से लग गई And he sat on his lap और वो बैठ गया उनके and they गोद में started embracing. और वो एक दूसरे को आगे बढ़ गए And Brahmananda said, what is that supposed to be? बोले ये क्या चल रहा है So we are enacting the pastimes of Shiva and Parvati. और शिव और पार्वती के लीलाओं को प्रदर्शन So Brahmananda said, come, let's go. बाबा ने कहा चलो चलते हैं And the boy said, I have not explained the philosophy. You have not understood. तो मैंने अभी तक सिद्धांत समझाया नहीं कहाँ जा रहे हो आप? Brahmananda said, we have understood very well. हम समझ गए हैं आपका सिद्धांत हम सब समझ So he said, wait, I have to explain to you philosophy. Brahmananda said, we have already understood. तो हम सब आपके सिद्धांत को समझ गए So we walked outside. तो आप लोग बाहर गए Brahmananda gave me a huge hug. और प्रभात जी ने मुझे आलिंगन किया He was whispering in my ear, all glories to Srila Prabhupada. उन्होंने कहा प्रभात जी के लिए Srila Prabhupada ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Brahmananda Prabhu ki jai, Go Premananda, Hare Krishna. Thank you very much.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो आप जो प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं इसमें महत्वपूर्ण और बहुत सुंदर से प्रवचन के लिए आपको धन्यवाद देते हुए हरे कृष्णा वालों का उद्घोष करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु की प्रभुपाद महाराज की And Prabhupada said, Prabhupada told us in his last days, प्रभुपाद जी ने अपने आखिरी के दिनों में कहा please encourage the devotees. प्लीज Encourage आप भक्तों को प्रोत्साहन कीजिए some chanting. और मैं वही कार्य कर रहा हूँ।